Today we are going to start the fourth chapter of second book, that is Footprint Without Feet. The question of trust. You must have read it in your school. This Yes, ma'am. chapter, when we read, first of all, we would be discussing what is the theme. Secondly, what are the important questions. And third, we would do the chapter. See, this chapter is a very message giving. In another word, we can say it is also bit sarcastic because the end is the word ending line says that. And if we look it from the perspective of any movie, अगर आप इसको एक मूवी समझकर देखो तो you will find it very interesting. There are many aspects कि हम किसी चोर को कैसे पकड़ते हैं, and then चोरों का अपना, जैसे कहते हैं ना, चोर चोर मुसेरा भाई, in Hindi we call it like that, चोर चोर मुसेरा भाई. But ultimately how they can even deceive each other, and sometimes आपकी थीम का क्वेश्चन है, appearances are deceptive. मतलब आप किसी को सामने से वो जैसा है, आपने उसके कपड़े या फिर द वे द पर्सन स्पोक, यू शुड नेवर जज अ पर्सन because appearances may be deceptive. Like we say, don't judge a book by its cover. Similarly, we need to be bit alert while we are dealing. From this chapter, as last year the chapter was deleted, this year it has been added again, question of trust. The main questions that have come is the character sketch of the narrator, of the main protagonist, जो पेपर में आया है. Once or twice the theme of the chapter, and occasionally 2 marker questions. That have been in the paper for the past few years, because last year it was deleted. Usse pehle there was no question. Usse pehle the theme was there, and in the schools when they give, they normally they go for the 4 marker or 5 marker question from this chapter, basically the theme or the character sketch. In our second book, जो भी हमारे maximum है उनमें character sketch are important from all the chapters. The chapter is about a thief. And why? Because thief hai, but he was smart. Horace Downby. He was also a lockmaker. He had been in this profession. But उसका ना एक जिसको कहते हैं सनकी, very wacky. He was very wacky. सनकी था वो थोड़ा सा. And every year he used to target one particular person, making a full proof strategy, and then rob the person, as he was also a book lover. This year also he had targeted a particular house. He did all his, homework. Homework का मतलब है he would be keeping each and every eerie detail about the family, about the house. In fact, what is the entrance, where are the switchboards, who are the people living over there, what are their natures, everything. So he had done everything, and ultimately he had also taken the privilege to enter into the house. अब उसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि ही ऑल्सो हैड allergic fever, hay fever, and he would often sneeze, छींके मारता था. तो अब जब वो वहां पहुंचा, as he had planned, this time
it was not what he had done every homework, he had entered into the house, लेकिन जब वो घर के अंदर पहुंचा तो वहां पर he had to encounter a woman. The woman claimed to be the owner of the house, and she said that she had come over there to take her jewels. अब पहले तो ये माना नहीं, but somehow the lady convinced him कि उससे जो मतलब कि जो ताला है उसकी चाबी खो गई है, and that her husband had told her and she had come here to attend a function. Anyhow, he was convinced. उसने जैसा सोचा था वैसे उसने सब कुछ निकाल के दे दिया, and उस लेडी ने कहा कि इन उसके बदले, in return, I'm not going to hand you over to the police. But few days later he was arrested, and when he was arrested तो उसने पुलिस को बहुत कहने की कोशिश की कि I did not steal, it was the woman of the house who had told me. लेकिन पुलिस ने भरोसा नहीं किया because there were all kinds of evidence against him. और फिर जब इसने बोला कि उस घर की मालकिन ने बोला तो वहां पर instead of that young woman there was an old woman, और उसने कहा कि when did I tell, ये बेचारा जो है, though he is thief, but यहाँ पर हमारा जो है सिंपैथी जाता है, स्माइल भी आती है, ये बेचारा बिना मतलब के फंस जाता है. एंड ही अंडरस्टैंड्स कि वो जो दूसरी लड़की थी जो कि ओनर बोल रही थी, शी वॉज ऑल्सो अ थीफ, एंड as a punishment he had to work in the library of the prison. He worked there, लेकिन अगर उसे कोई कहता है ना there is honor among thieves, जो मैंने अभी हिंदी में आपको बोला था, चोर चोर मौसेरे भाई, when someone tells, तो उस वक्त में he feels irritated. So that is the chapter. It is really very interesting chapter. So let us start with that. If you read this box, you will find it is said that you must set a thief to catch a thief. But it is also said there is honor among thieves. Which saying does this story illustrate? मतलब इसमें दो आपके कोट्स है, दो प्रोवर्ब्स है. एक कहता है चोर ही चोर को पकड़ सकता है, और दूसरा कहता है कि चोरों में भी एक ऑनर होता है. They also have certain respect for each other. When we say about the fraternity, हम अपने ही fraternity के बारे में बात कर रहे हैं. तो but on the other hand, which goes, of course it is the first one, that a thief is said to catch a thief. Everyone thought Horace Danby was a good, honest citizen. Why? Because he was about 50 years, unmarried, and lived with a housekeeper who worried over his health. अरे वो थोड़े एजड थे, इसीलिए उसके हेल्थ के बारे में उसके हाउसकीपर को बहुत फिक्र थी. इनफैक्ट ही वाज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ hay fever in summer. Hay fever is an allergic fever. He made locks. Irony देखा आपने कि he is a thief, but he used to make the locks, and was successful enough at his business to have two helpers. This was once an RTC. इसका मतलब क्या होता है? मतलब उसका बिजनेस इतने अच्छे से चल रहा था कि उसने अपने साथ दो हेल्पर्स भी रखे हुए थे. Yes,
Horace was good and respectable, but not completely honest. What is the meaning of this? Means वो अच्छा आदमी था, और समाज में हम किसको रेस्पेक्ट करते हैं? Whom do we respect? The person who are earning well, a person who is wealthy, उनको हम लोग रेस्पेक्टेबल बोलते हैं. बट ही वॉज नॉट ऑनेस्ट. मीन्स अपने काम से लेकर या फिर अपने तरीकों में ही वॉज डिसऑनेस्ट. 15 years ago, he had served his first and only sentence in a prison library. He loved rare, expensive books. So he robbed a safe every year. ये उसका एक मतलब कि शौक था कि उसे बहुत ही महंगे और बहुत ही रेयर बुक्स पसंद थे, और इसीलिए हर साल उसकी एक स्ट्रेटजी थी दैट ही वुड बी रॉबिंग वन हाउस. Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months, and secretly bought the books he loved through an agent. ये उसका जो है, this was his, what can you say, side business. You can say this was his passion, or you can also say that he was little bit wacky about those. क्योंकि इंसान के पास पैसा है तो वो सीधा भी खरीद सकता है, लेकिन he had this weird kind of hobby कि वो पूरे मतलब कि वो पहले प्लान करेगा, उसके बाद ही वुड रॉब, एंड इतना रखेगा कि उसके पास पूरे 12 महीने तक रखे, और जो बुक्स वो खरीदना चाहता है दैट ही वुड बाय. Now, walking in the bright July sunshine, he felt sure this year's robbery was going to be as successful as all the others. For 2 weeks, he had been studying the house at Shotover Grange. Shotover Grange is a place. Looking at its room, its electric wiring, its paths, its garden. As I told you, he was very well strategic. तो जब वो रॉब करता था तो वहां की हर चीज को नोटिस करता था ताकि वो कभी खतरे में ना पड़े, so that he doesn't fall into any danger. This afternoon, the two servants who remained in the Grange while the family in London had gone to the movies. Horace saw them go and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. फैमिली जा रही तो वो खुश था. नाउ प्रॉब्लम क्या थी? उसको थोड़ा सा हल्का हल्का फीवर लग रहा था. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. There were about 15,000 pounds worth of jewels in the grand safe. If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year. There were three very interesting books coming up this for sale in the autumn. Now he would get the money he wanted to buy them. उसका जो उसका प्लान था कि वहां जो jewels है उसे बेचकर वो जो पैसा लेगा, he would be planning to buy another book. He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. He was always very careful not to leave any fingerprints. This is what I said कि there is an irony, a sarcastic word, क्योंकि उसने fingerprints के लिए हमेशा वो gloves पहनता था, and this is how what happened कि उसे अपने gloves उतारने पड़े. That's the irony. मतलब वो कभी भी इसलिए पकड़ में नहीं आता था क्योंकि वो gloves पहनता था. A small dog was lying in the kitchen. It stirred, made a noise and moved its tail in a friendly way. This is because this man, Horace, knew how to deal with the animals when he used to go for the robbery. All right, Sherry, मतलब उसको जो है ये पेपर में आपके आया था. All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. मतलब this was how he used to handle the dogs, क्योंकि उसको मतलब कि उसने ये पढ़ा था that अगर आपको डॉग्स को फ्रेंडली वे से करना है तो देन आपको उसका नाम आना चाहिए एंड उसको आपको प्यार से उसके साथ डील करोगे.
and then they would, उनको ऐसा लगेगा, the dogs would feel that you know them. The safe was in the drawing room behind a rather poor painting. एक painting बनी थी, उसके पीछे safe था. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. But they took up too much room in a small house. Books were better. एक पल के लिए तो उसको लगा वो भी ऐसा ही करे कि पेंटिंग्स इकट्ठा करना शुरू कर दे. फिर उसको लगा नहीं भाई, मेरा घर तो छोटा है, बुक्स ठीक है. There was a great bowl of flowers on the table. और उसको जो है एलर्जी थी, वहां टेबल पे फ्लावर्स रखे थे, सो उसकी नाक जो है वो टिकल करने लग गई. He gave a little sneeze and then put down his bag. He carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servants returned. उसने सारा कैलकुलेट कर रखा था. You can be asked a question that Horace was a meticulous robber. आपसे ये पूछा जा सकता है कि explain that Horace was a meticulous robber. Meticulous मतलब a person who is very calculative. And here you can see उसने पहले से ही, अगर आपके क्वेश्चन में मतलब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है meticulous मतलब that you can say that he carefully planned for the robbery. He would study each and every factor about the house, about the people living there, about the pets they are following, what are the time of coming and going, everything. तो वो हर चीज को नोटिस करता था. दैट इज वाई. एंड उसने मतलब कि कितना घंटा उसके पास है, जैसे यहाँ लिखा है कि ही हैड 4 hours. तो दिस शोज दैट ही वाज वेरी मेटिकुलस. वो काफी कैलकुलेटिव था, हर चीज को सोच समझ कर करता था. The safe was not going to be hard to open. After all, he had lived with locks and safes all his life. मतलब he was confident that वो पूरी जिंदगी उसने जो है लॉक्स के साथ काम किया है, उसके लिए लॉक ओपन करना जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा. The burglar alarm was poorly built. He went into the hall to cut its wire. He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. अब उसने पहले मतलब कि कहीं घंटी ना बज जाए, तो he also made that arrangement. How foolish people are when they own valuable things, Horace thought. अब आपका क्वेश्चन है कि how did he come to know कि वहां पर इतने पाउंड्स की मतलब उसका जो है उस घर के अंदर इतना पैसा था, उस घर का इंटीरियर ऐसा था. हाउ डिड ही कम टू नो? So this is the answer. Horace thought a magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and picture of this room. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. मतलब कितने बेवकूफ हो सकते हैं कि आप अपने घर का इंटीरियर जो है यू आर रिवीलिंग टू अदर्स. नॉर्मली इट इज नॉट डन. आपका घर छोटा है, बड़ा है, यू आर लिविंग इन अ मैंशन, पैलेस, एनीवेयर, यू मस्ट नॉट. बट ऑलरेडी मैगजीन के अंदर ये सारी चीजें जो है ऑलरेडी एग्जिबिट हो चुकी थी. And that is why he was able to find and he was able to execute his plan effectively. But he found the flowers were hindering him in his work. He buried his face in his handkerchief. क्योंकि उसे एलर्जी थी, तो बार बार फ्लावर्स के जो स्मेल था उससे उसको जो है he was getting the sneeze. तभी उसको एक आवाज आई. What is it? A cold or a hay fever? Before he could think, he said hay fever and found him sneezing again. किसी ने पूछा उससे कि तुम्हें कोल्ड हो रहा है या फिर ये एलर्जिक फीवर है. उसने बोल तो दिया. The voice went on, you can cure it with a special treatment, you know, if you find out just what plant gives you the disease. I think you would better see a doctor if you're serious about your work. I heard you from the top of the house just now. And someone told कि अगर तुम्हें ये पता है कि वो किस फ्लावर से या किस प्लांट से तुम्हें एलर्जी है, तो तुम उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हो. एंड तुम्हें जो है यू शुड गेट द ट्रीटमेंट बिकॉज इफ यू वांट टू डू योर वर्क. मैंने अभी तुम्हें सुना.
It was a quiet, kindly voice, but one with firmness in it. मतलब बात करने वाली जो थी, she was very kind, लेकिन एक firmness था. The person was not very loose. The person was firm in his words, in her words. A woman was standing in the doorway and Sherry was rubbing against her. वहां एक लड़की खड़ी थी, एक औरत, और जो शेरी यानी कि द पेट डॉग, इट वॉज नचिंग अगेंस्ट दैट. नॉर्मली पेट किसको नच करता है? ओनर को करता है. नॉर्मली इट इज अ वन जिसको वो जानते हैं, वो उसी को रब करते हैं. शी वॉज यंग, quite pretty, and was dressed in red. She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. वो सुंदर सी भी थी. Down, Sherry. Anyone would think I had been away for a month. However, I came back just in time, though I did not expect to meet a burglar. अब उसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब शी हैड द कॉन्फिडेंस इन हर वॉइस. शी सेड सबको लग रहा होगा कि मैं तो 1 महीने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ, बट मैं मतलब कि बिल्कुल निक ऑफ द टाइम आ गई हूँ, बट आई नेवर एक्सपेक्टेड टू मीट अ थीफ हियर. Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. He might avoid trouble if he treated her right way. अब उसको जो है पता तो लग गया कि ये, मतलब उसने अंदाजा लगाया, इट वॉज हिज एक्सपेक्टेशंस दैट दिस लेडी इज द ओनर ऑफ द हाउस. अब उसको लगा कि मैं कैसे अपने आप को छुड़ाऊं, पीछा कैसे छुड़ाऊं. तो द बेस्ट थिंग व्हाट ही थॉट वाज, इफ आई एम गुड टू हर, इफ आई एम पोलाइट टू हर, देन मे बी मैं छूट जाऊंगा. दिस वॉज हिज. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट एनी वन ऑफ द फैमिली. तो उसने कहा, यस, you see, I see what an inconvenience it is for you to meet me. What are you going to do? This was again a, you can say, a sarcastic question. बेचारा, तुम्हारे को तो बड़ी ही प्रॉब्लम हो गई है ना, अब तुम क्या करने वाले हो? She asked in that way. My first thought was to run. पहले मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊंगा. Of course you could do that, but I would telephone the police and tell them all about you, then they would get you once. हाँ तुम करो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी, पकड़वा दूंगी. Horace said I would of course cut the telephone wires first and then I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. He was also very confident. उसने कहा कि आप फोन करो, उससे पहले तो मैं फोन के वायर्स भी कट कर दूंगा, और I would be making such arrangements कि कुछ टाइम तो आप कुछ नहीं कर सकते, और उसके लिए मुझे कुछ टाइम ही चाहिए. तो उसने कहा, ओ मतलब तुम मुझे हर्ट करोगे. I think I was trying to frighten you when I said that. तो उसने कहा, मैं तो आपको डरा रहा था. Oh, you did not frighten me. तो होरेस ने अल्टीमेटली अपने, he put his hands down. He put his hands down मतलब उसने एक तरफ से हार मान लिया, and he said, it would be nice if you would forget you ever saw me. Let me go. आप मुझे मतलब कि छोड़ दो, भूल जाओ इस बात को और मुझे जाने दो. The voice was suddenly sharp. और तभी वो जो वॉइस था वो थोड़ा सा मतलब कि ऊंचा हो गया, थोड़े गुस्से में. Why should I? You were going to rob me. If I let you, you will only rob someone else. Society must be protected from men like you. What a comment. What a comment from this lady. उसने कहा, क्यों छोड़ू मैं तुमको? आज मैं तुमको छोड़ दूंगी तो तुम किसी और के घर में जाकर चोरी करोगे, एंड ऐसे लोगों से तो हमें सबको बचाना है. I'm not a man who threatens society. I steal only from those who have a lot of money, and I steal it for a very good reason, and I hate the thought of prison. Now he tried to justify his act. वो अपने एक्ट को जस्टिफाई कर रहा था कि मैं उन चोरों में से नहीं हूं जो कि समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बुरे हूं. मैं तो एक अच्छे काम के लिए ही चोरी करता हूं. एंड देन आई डोंट रॉब एवरीवन
मैं सिर्फ उन्हीं को करता हूँ जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, एंड मुझे प्रिजन बिल्कुल नहीं पसंद है. She laughed and he begged, thinking that he had persuaded her. वो उसको मनाने की कोशिश कर रहा था और उसे लगा कि शायद वो मान गई है. Look, I have no right to ask you for anything, but I'm desperate. Let me go, and I promise never to do this kind of thing again. I really mean it. उसने एक बार फिर उसको मनाने की कोशिश की. उसने कहा, देखो मुझे जाने दो और आगे मैं ऐसे कभी नहीं करूंगा. She was silent, watching him closely. Then she said, you are really afraid of going to prison, aren't you? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सचमुच में चोरी से बहुत प्रिजन से बहुत डर लगता है ना. She came over to him shaking her head. I have always liked the wrong kind of people. फिर उसने कहा, मुझे ऐसे लोग बड़े पसंद है. She picked up a silver box. Means she was acting so confidently कि कोई नहीं कह सकता था कि वो उस घर की औरत नहीं थी. Nobody could say that. That was a beauty. She picked up a silver box, took a cigarette from it. Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off the gloves and gave her a cigarette lighter. अभी मैंने आपको आगे एक बात बताई थी ना, उसने क्या किया, गलती क्या की, उसको मनाने के लिए, just to persuade her, वो भूल गया that he might get into trouble. उसने फटाफट से सिगरेट लाइटर लिया और उसको खुश करने के लिए, टू फ्लैटर, उसने he picked out his gloves. That was where he made the first mistake. आपके पेपर में आ सकता है a question कि what was the mistake he had made. You will let me go? आप मुझे जाने दोगे ना? Yes, but only if you do something for me. उसने कहा अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगे तो. उसने कहा anything. But before we left for London, I promised my husband to take my jewels to a bank. But I let them here in the safe. I want to wear them to a party tonight, so I came down to get them. But तो उसने कहा कि एक्चुअल में मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि मैं सारे के सारे जो जूल्स हैं वो मैं सेफ में रख दूंगी, बट मैं भूल गई और आज मुझे जो है मैं यहाँ आई थी फॉर अ पार्टी. बट तो उसने कहा, ओ यू आर फॉरगेटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, है ना. तो उसने कहा यस. विदाउट थिंकिंग. कभी कभी हम कहते हैं कि वी मस्ट नॉट टेक एनी डिसीजन इन हेस्ट. Hasty decisions are always harmful. This is one of the important lesson that we can learn through this, that hasty decisions, kabhi bhi hame na jaldbazi mein koi decision nahi lena chahiye. He did not think twice before speaking this word. Just leave to me and you will have them within an hour, but I'll have to break your safe. उसने कहा बस आप मुझे 1 घंटा देना, मैं तुमको जो है ये खोल के दे दूंगा, लेकिन शायद मुझे आपके सेफ को तोड़ना पड़े. तो उसने कहा डोंट वरी अबाउट दैट, माय हस्बैंड वोंट बी देयर फॉर अ मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मेंटेन बाय दैट टाइम. टेंशन मत लो, मैं उसको जो है 1 महीने में ठीक करवा दूंगी, अभी तो मेरे हस्बैंड ने आना नहीं है. And within an hour, Horace had opened the safe, given her the jewels and gone away happily. अब उसने जैसा सोचा था उसने खोला, उसने जूल्स निकाले एंड उस वुमेन को दे दिया. एंड ही वॉज सो हैप्पी क्योंकि उसने कहा था कि इफ यू ओपन द सेफ फॉर मी देन आई लेट यू गो. तो वो बड़े प्यार से निकल के चला गया. फॉर 2 days he kept his promise to the kind young lady. On the morning of the 3rd day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. उसने तो ये बोला था ना कि मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा, तो 2 दिन तक तो उसके दिमाग में वो बात नहीं आई. बट तीसरे दिन उसको लगा कि नहीं भाई, मुझे तो बुक्स खरीदनी है और उसके लिए तो आई हैव टू फाइंड आउट अनदर वन. बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान. लेकिन वो अपना इस प्लान को कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाया. Why? Because by noon, a policeman had arrested him for the jewel robbery at the Shotover Grange. क्योंकि शाम तक
दोपहर तक वो अरेस्ट हो गया था. नाउ his fingerprints, for he had opened the safe without gloves. Normally he would be taking all the important अपने लिए वो सारे के सारे precautions लेता था. But that time he had forgotten to wear his gloves because उसे तो लगा था कि he is trusting the lady of the house. वो तो उस घर के औरत को trust कर रहा है. Secondly, he had forgotten when he had taken it for the lighter. तो उसके fingerprints match हो गए. His fingerprints were there, for he had opened the safe without gloves, were all over the room, and no one believed him when he said the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. और वो जब वो बार बार प्लीड कर रहा था कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया, ये तो वहां की जो मतलब की जो ओनर थी उसकी वाइफ ने ही बोला था. अब उसके सामने ओनर आए. द वाइफ herself, a gray-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. लेकिन वो जो ओनर थी वो कोई वो वाली ओनर नहीं थी जो सुंदर सी थी, रेड कलर के ड्रेस पहने थे. वो औरत तो कोई 60 साल की ओल्ड वुमेन थी जिसके बाल भी पूरे सफेद थे. And that is how he was caught. Horace is now the assistant librarian in the prison. He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was and who tricked him. और वो जब भी उसको टाइम मिलता वो उसी औरत के बारे में सोचता है कि उसने किस तरीके से इसको बेवकूफ बनाया. बिकॉज एज अ उसको जो है एज अ पनिशमेंट ही वॉज गिवन दिस ड्यूटी देयर. He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. I told you in the very beginning कि in the end you will be learning one line. What is the meaning of honor among thieves? Normally thieves are, when we are in a profession, when we are in the same fraternity, we need to respect each other. चाहे वो चोर ही क्यों ना हो. वो एक हिंदी में कहावत होती है कि चोर का भी अपना एक ईमान होता है. Means they are or dishonest to others, but on the other hand within their own fraternity, अपने fraternity के साथ में वो लोग honest होते हैं. लेकिन यहाँ पर तो वो भी नहीं हुआ because he was tricked by another thief and he was caught. पैसा भी वो सारा लेकर चली गई. He was imprisoned also and he could not even fulfill his wishes. So that's the question of trust. A very interesting story. This third question, Horace Danby was good and respectable, but not completely honest. In the beginning, these lines are given. Means in the society, we normally respect a person who is having wealth, who is well settled. But in his ways, apne kaam mein, he was dishonest. Why do you think this description is apt for Horace? Why can't he be categorized as a typical thief? इसीलिए because he was having his business, he was having his two people working under him. So that is why he was good and respectable. But he cannot be categorized as a typical thief, क्योंकि जो typical thief होता वो तो चोरी करता अपने आप को जिंदा रखने के लिए. That is his profession. He was not professional thief. He was a thief for purpose. वो सिर्फ अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए चोरी करता था. सो ही वॉज नॉट अ टिपिकल थीफ. एंड देन हॉरेस डैनबी वॉज अ मेटिकुलस प्लानर. ये पेपर में आया, मैंने आपको अभी बताया भी था. व्हाट द मीनिंग ऑफ मेटिकुलस? वेरी कैलकुलेटिव. बट स्टिल ही फॉल्टर्ड. वेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड व्हाई? ही वॉज अ मेटिकुलर प्लानर. क्यों? क्योंकि he would study each and every point before he made any move. But on the other hand, he still faltered because he had taken a hazy decision. Without thinking for the moment, he had taken off his gloves
and his fingerprints were there in the room. Then this question, do you think Horace was unfairly punished or that he deserved what he got? Last time मैंने एक क्वेश्चन ऐसे ही करवाया था, तो I told you कि when there is a question which is debating, जिसमें दोनों आंसर्स हो सकते हैं yes भी और no भी, तो उनमें you have to write your own answers. Like इसके अंदर I would say no, he was not unfairly punished. From my point of view, not as a teacher, my personal point is he was not unfairly punished because चोरी चोरी होती है, आपने किसी भी चीज के लिए की हो. And when you are barging into another's house, आप किसी के घर के अंदर घुस रहे हो, that is not justified at any moment. चाहे आप बुक्स पढ़ने के लिए कर रहे हो, चाहे आप किसी और के लिए कर रहे हो. हाँ, अगर वो अपने लिए खाना खाने के लिए उसने चोरी किया होता, दो ब्रेड के लिए चोरी किया होता, then it must have been said that it is unfair. But here he had robbed, मतलब he used to rob the people with a good money. So he deserved what he got. Then the last question, do intentions justify actions? Would you like Horace do something wrong if you thought your ends justified the means? Do you think that there are situations in which it is excusable to act less than honesty? This is the answer which I had told you. कि हमारा intention अगर किसी को मदद करना है. There is one very famous story which was there in 9th standard long back. दूसरे वाले book में होता था, The Bishop's Candlestick. And in that chapter, it was really very, very nice chapter. Very nice. In fact, not a chapter, but it was a drama. In that, what happens is, there was a man. That man was not a thief. He was not a thief. He was a hard-earning labor. But London के अंदर बहुत सर्दी पड़ती है. And that particular year he was not getting any work. उसे उस साल कोई काम नहीं मिलता है. तो on the other hand उसकी जो wife होती है, she is critically ill. उसकी wife बहुत बीमार होती है. They were not having anything to eat. तो वो जाता है अपनी wife के लिए खाना लेने. He goes to buy food, he goes to get food for his wife. But he doesn't get the food and he steals. वो चोरी करता है. And that is only for the food. Yet he is caught. उसको पुलिस पकड़ लेती है. And ultimately he is put into a prison for 10 hard years. थोड़े ही टाइम बाद उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है because she was already ill. And उसको जो है in the prison he gets a number. उसको एक बिल्ला मिल जाता है उसके नाम का 402. और थोड़े टाइम बाद he even forgets that what was his name. उसको इतने बुरी तरीके से मारा जाता, पीटा जाता है. Ultimately when एक दिन उसको टाइम मिलता है और वो प्रिजन से भाग जाता है. And he reaches a bishop's house. और अब वो intentionally चोरी करता है. Again, वो चोरी इसलिए नहीं करता है because he wanted to become a thief. He wanted कि वो कुछ पैसा इकट्ठा करे and अपना business start करे कहीं ऐसी जगह जहां कोई उसे जानता ना. All this comes to the knowledge of the bishop. And वो जब चोरी करके चला जाता है, पुलिस फिर उसे पकड़ लेती है. बट दिस टाइम बिशप उसको बचा लेता और वो कहता है कि मैंने इसको खुद ये कैंडल स्टिक दिया था. सो व्हेन अब पहली बार जब उसने चोरी किया, इट वाज ओनली फूड. बट सेकेंड टाइम ही स्टील्स द कैंडल स्टिक. तो इंटेंशंस मतलब यू कैन नॉट जस्टिफाई द एक्शन कि भाई
अब पहली बार जब उसने चोरी किया था ना, तो उसका जो पनिशमेंट था दैट ही डिड नॉट डिजर्व, क्योंकि उसने खाने के लिए, एंड दैट टू हिज वाइफ वाज इल, शी वाज डाइंग। लेकिन इस वाले चैप्टर में जो हम अभी पढ़ रहे हैं, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, हिज इंटेंशन वाज टू बाय द बुक, लेकिन क्या बुक पढ़ने के लिए मुझे चोरी करनी चाहिए? नो, नॉट एट ऑल। सो हियर द इंटेंशंस आर रॉन्ग, यू कैन नॉट जस्टिफाई दीज इंटेंशंस। इस क्वेश्चन के अंदर आपका दिया हुआ है कि डू यू थिंक देर आर सिचुएशंस इन विच इट इज एक्सक्यूजेबल लेस देन ऑनेस्टली? यस, अनलेस एंड अनटिल एक ऐसा सिचुएशन है जहां आपका डू और डाई वाला सिचुएशन है, वहां आपने कोई गलत काम कर दिया, जैसे कहते हैं कि अपने आप को बचाने के लिए अगर हमने किसी को मारा, दैट इज ओनली वेयर यू कैन एक्सक्यूज योरसेल्फ। ऑल अदर चोरी सिर्फ चोरी होती है। तो ये आपके वो है थीम बेस्ड क्वेश्चंस, जो मैंने आपको बताया भी था ड्यूरिंग द चैप्टर, लाइक ही वॉज अ मेटिकुलस प्लानर, उसको जस्टिफाई करो, तो दिस, एंड देन you might be having the character sketch of the woman of Horace. तो आपको बताना है that he was a thief, he was very smart, he was very meticulous, मतलब वो स्मार्ट भी था, बहुत सोच समझ के काम करता था। ये वाला जो आपको सारे उसको एक्सप्लेन करना है इन दिस, मतलब यू मे गेट अ क्वेश्चन। बाकी इस वाले चैप्टर से ऐसे वाले क्वेश्चन ही ज्यादा आए हैं, नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि उसने क्या किया, कैसे किया, ऐसा कुछ नहीं आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अबाउट द थीम, अबाउट द मैसेज एंड अबाउट द कैरेक्टर। दिस इज द चैप्टर, द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। व्हाई द चैप्टर हैज बीन नेम्ड, मतलब इस चैप्टर का जो नेम है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इज, इन द एंड ही सेज, मतलब उसको गुस्सा आता है if someone says that there is honor among thieves। तो क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का मतलब होता है एक सवाल दूसरे पे भरोसा करने का। He had trusted that woman thinking that she was the owner of the house, but he was tricked. So the question is whether we must trust everyone or not, right? So this is a chapter.